Hello, Sunbeamers. How are you? I hope you all are fine. So, today we are beginning the session for class 8 Cbse students, and we are beginning with the most important and interesting chapter of your science from NCRT, that is Microorganisms, Friend and Foe. Why I prefer to teach you from NCRT books? Because you should keep a habit of studying it. Why? Because in future it will work, because for your competitive examinations and also for the Cbse examinations, NCRT book is a must. So you all should study from NCERT books. Okay. Yes. So I will prefer here to teach you in English as well as some Hindi. Okay, so let's start. So microorganisms. What is organism? Organism means a living individual. Okay, the something that is living or something that is composed of organs is organism. Micro means small. Small se bhi chota. Very, very, very small. Okay, which you cannot see in your naked eye. Okay, you cannot see through the lens of your eye. You are unable to see a microorganism through your naked eye. So the organisms that is very, very, very small, okay, are the microorganisms, or we call them in short as microbes. So, for example, in NCRT, if they have given an example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. You keep one bread outside for some days. After some time, you will see there will be grayish white patches on it. Why? So what happens here? Nothing, no animal came, no one replaced it. Nothing has happened. How it changes color? Due to the action of microorganisms. Okay. Due to the action of microorganisms, you will be seeing that grayish white patches. Okay. So you can only see the reaction. Okay. You cannot see that microorganisms. They are very, very, very minute. You can see it by lens, magnifying lens, or by microscope. You cannot see it by your naked eyes. Two activities are given here. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker. Under the microscope, what do you see? You will see different types of microorganisms there in the microscope. Okay. So, their characteristic of microorganisms is they are not, they are very, very small, and we are not able to see that microorganisms through our naked eye or unaided eye. What is unaided eye? Unaided eye means eye without a microscope. Okay. So through the microscope only we can see these microorganisms. Some of the microorganisms are a little bit bigger, like your fungi or fungus, okay, which grow on bread. The bread mold, we say them as bread mold. And we can easily see that using a magnifying glass. Okay. Okay, using a magnifying glass. So you give me 1 second. Let me show you the picture of the bread mold on the bread. Okay, my dear students, you can see the image of the bread. Okay. And if I zoom it, you can see these grayish white patches. And this is your fungus. Okay. This grayish white patches. This one you can do it at your home also. Easily you will find. Okay. So with the help of magnifying glass, you can see the fungus growing on the bread. Microorganisms can classified into 4 important groups. What are that groups? Bacteria, fungi, protozoa, and some algae.
So what are the four important group of microbes? The bacteria, the fungi, the protozoa, and the algae. Some algae. Viruses. So virus, when the name virus comes, suddenly coronavirus comes to your mind. So coronavirus is also a type of virus. So virus are also another form of microorganisms. They are microscopic. Microscopic means small, but are different form of other microorganisms. However, they reproduce only inside the sea. What happens? Virus, suppose this is one human body. Outside the human body, this is the virus, small one. I am drawing the big picture here. This is the virus and this is the human body, H. Outside the body, this virus is a dead organism. Dead. See, other microorganisms, suppose I will take one bacteria here. This is one bacteria. Outside your body, this bacteria is not dead. This bacteria is living. Body से बाहर bacteria dead नहीं है. Bacteria living है. But when inside the body भी bacteria living है. But outside the body, this virus is dead. और जब वो host के पास, host means the human body, जिस organism पर microorganism attack करता है, उसको हम बोलते हैं host. The organism or the living individual on which the microorganisms attack is the host. जिस पर infect होते हैं जिससे, उन्हें host बोला जाता है. Host. H-O-S-T, host. Host organism. So ये human क्या हो गया अभी? ये human हो गया host. Okay? This human is now host. And when the virus infects the host or comes near the host, it becomes living. वो डेड से क्या हो जाता है? उसका लिविंग हो जाता है. डेड से वो लिविंग हो जाता है. The virus becomes living. Okay? And this virus can infect bacteria. Bacteria को भी virus infect करता है. Plant and animal. Plant को भी disease होता है microorganisms के वजह से. Animal को भी, animal तो होता ही है. Humans भी animal है. तो कोरोना वायरस जैसे हो गया, नॉर्मल फ्लू और जो होता है वो भी. Some virus diseases, ये important, this is important. Some viral diseases like cold, influenza and coughs. Cough जो होता है आपका, खांसी होता है, cough. They are all caused by viruses. Some serious diseases are also there, like polio and chicken pox. Also, your corona or COVID is caused by your virus, COVID. Okay. So, protozoa. Protozoa is also a microorganism. छोटा होता है. What are the diseases caused by protozoa? Dysentery. Okay, dysentery वो intestine आपका जो होता है, it affects your intestine. Malaria caused by mosquitoes, दो vector होता है, mosquito होता है. See, now you will ask, sir, malaria is caused by mosquitoes. How you are telling protozoa? See what happens when the mosquito, female Anopheles mosquito, she bites you. What happens? She transmits the protozoa into your blood. वो जो है उसके जो salivary gland होता है, जो मलेरिया बाइट करता है ना आपको, तो उसमें वो उसके सलाइवा के थ्रू से वो क्या करता है, आपके बॉडी में प्रोटोजोआ भेज देता है. ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम है प्रोटोजोआ का, इतना जरूरत नहीं है. What happens? The mosquito sends protozoa to your body and that protozoa causes malaria to you. So वो मॉस्किटो क्या होगा? वेक्टर हो गया. वेक्टर मतलब वो ट्रांसमिट करता है, बाकी डिजीज तो प्रोटोजोआ ही कॉज करता है. कॉज ड्यू टू प्रोटोजोआ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोस, दैट मच. और बैक्टीरियल डिजीज का एग्जांपल है टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एग्जांपल्स कैन कम इन एग्जामिनेशंस. See, bacteria, you will see bacteria is like this under the microscope. Why this is colored? Due to stain. जो बैक्टीरिया हम देखते हैं उससे पहले उसमें हम कलर डालते हैं. वो स्लाइड में when we see the bacteria in a slide, we apply color or stain to that so that the bacteria becomes visible. I will show you the video. You can see in the YouTube also how we examine bacteria under a microscope or how we
सी बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप, सी एल्गी हो गया, एल्गी, क्लाइमेडोमोनास, दिस इज वन एल्गी, स्पाइरोगायरा, सी spiral shaped, protozoa, amoeba, paramecium. Okay, so these things you have to remember, and the diagrams also you have to remember. Fungi हो गया आपका ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड को हम लोग राइजोपस भी बोलते हैं. ओके, इसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज योर राइजोपस. पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया. So they are all your fungi. Now this is your virus. The virus, see, the name of the virus you are seeing in the picture is bacteriophage. Okay, the name of the virus you are seeing on picture is bacteriophage, and it infects bacteria. Okay, this is the virus called bacteriophage. नाम अगर लिखना जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना तो लिख सकते. Bacteriophage. Where do microorganisms live? Microorganisms रहते कहाँ? यहाँ पे एक चीज आता है, microorganisms may be single celled, unicellular, unicellular like bacteria, algae, some algae and protozoa. Multicellular means एक से ज्यादा cell like many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. हर जगह पे आपको microorganisms मिल जाएंगे. ह्यूमन बॉडी में भी, हमारे पेट में भी हमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. इन आवर बॉडी वी हैव बैक्टीरियास. ओके, इन आवर बॉडी वी हैव बैक्टीरियास, दे आर नोन एज योर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया मिलता है. किसी का कोई डिजीज होता है तो उसमें भी बैक्टीरिया मिलता है. ठीक है, सो these microorganisms are found in each and every area. In your body also you will found some microorganisms. Okay, हमारे ह्यूमन गट में भी हमें जो है बैक्टीरिया मिलता है. ठीक है, चलो, microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. अब तो बोलोगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमेशा डेंजरस नहीं होता. समटाइम्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डेंजरस एंड समटाइम्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल. बहुत जगह पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है बेनिफिशियल होता है. हमारे बॉडी में भी डाइजेशन, बहुत सारा बैक्टीरिया यूज होता है डाइजेशन में. ये बहुत सारा चीज, कर्ड बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया चाहिए, जेलीज जेम्स बनाने, फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया चाहिए. ओके, some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Friendly microorganisms. Friendly microorganisms means that microorganisms which are beneficial to us. Okay, for what? For the making of preparation of curd, bread and cake. इस तीनों चीज के लिए हमें बैक्टीरिया चाहिए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स चाहिए. Alcohol. See, production of alcohol means we need fermentation. So for this fermentation, we need microbes. Okay, fine. They're also used in cleaning up the environment. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of animals' feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. जो होता है आपका डिग्रेडेशन होता है. जो ऑर्गेनिक वेस्ट बाहर, आप जो वेजिटेबल पील बाहर फेंक दो, कुछ दिन बाद देखना वो ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा. क्यों मिल जाता है वो? ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करता है और धीरे 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 वो उसको वो डिकम्पोज कर देता है. रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को रिमेन्स को भी, फीसेस जो होता है आपका, उस सबको हार्मलेस चीजों में ब्रेक डाउन बैक्टीरिया करता है. सॉइल फर्टिलिटी और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया का रोल है. तो
सी इन एग्जाम दे विल आस्क यू पॉइंट वाइज आपको लिखना है, आप बड़े हो गए हो, यू आर इन 8th क्लास, so in point wise you have to write what are the uses, decomposition of organic waste into harmless simpler substances और usable substances। जो होता है आपका कंपोस्ट होता है, आप कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि जो घर का जो मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है आपका, वो सब आप कंपोस्ट करके आप मिट्टी में डाल सकते हो, तो उसका काम किसका होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम होता है। इट इज द वर्क ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप 7th में पढ़े हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द वर्क ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास हो गया, बहुत सारा नाइट्रोजन फिक्सिंग, राइजोबियम हो गया, ये सब का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड किसमें, कैसे आप मिल्क से कर्ड कैसे बना सकते हो? सपोज कर्ड, आप एक मिल्क में आप कर्ड खुद डाल दो, पूरा कर्ड बन जाएगा। क्यों? लैक्टोबैसिलस की वजह से। लैक्टोबैसिलस, ये नाम आपको याद रखना। और लिखते टाइम जब एग्जाम में लैक्टोबैसिलस लिखोगे तो आप ऐसे लिख के उसको अंडरलाइन करना है। यू हैव टू अंडरलाइन दैट लैक्टोबैसिलस बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक नेम। मिल्क में वो मल्टीप्लाई होके क्या बनाता है? कर्ड बना देता है। हाउ मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड? सपोज यू ऐड सम मोर मिल्क, सम मोर कर्ड into milk, it will automatically convert whole milk into curd. Why? Because the lactobacillus will grow in number and convert milk into curd. चीज मेकिंग के लिए आपका बैक्टीरिया चाहिए। ओके, उसका नाम है प्रोपैनियोबैक्टीरियम सरमानी, जिससे चीज बनता है, सब जरूरत नहीं है। ओके, फिर आपका रवा जो है, सूजी, इडली, भटूरास बनाने के लिए आपको कर्ड चाहिए। सो वो भी है, फर्मेंटेशन में काम आता है। उसी सब के लिए फर्मेंटेशन, डोसा का बैटर, बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन में आपका हेल्प करता है। इडली का, इडली देखो, जब आपका मम्मी, व्हेन योर मदर इज प्रिपेयरिंग इडली, she will prepare the urad dal batter just a night before preparing the idli. Why? Because that will allow fermentation. fermentation होने से क्या होगा? इडली अच्छे से स्टीम हो पाएगा। आफ्टर योर मिक्सिंग में जब वो उड़द दाल को मिक्स करेंगे, अच्छे से नीड कर देंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे? उसको निकाल के उसे ऐसे ही ओढ़ के रख देंगे। क्या होगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा, इडलीज बन जाएगा, डोसा बैटर भी बन सकता है उससे। ठीक है। सो ईस्ट पाउडर से आप ऐसे बना सकते हो। देखो, मैदा ईस्ट मिला दो, वैसे फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? ईस्ट ग्रो करता है इसलिए फूल जाता है। देखो मैदा, you add some maida and yeast powder to it, market में easily available है yeast powder, and then that maida will be raised, you can make good samosas after that. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of gas fill the dough होता है, इसको dough बोलते हैं हम लोग, and increase its volume. It will increase its volume, so the छोटे कम मैदा से भी हम ज्यादा volume produce कर सकते हैं। On the basis of the use of yeast in baking industry for making breads, pastries and cake. अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए आपको ईस्ट जरूरत होता है, फर्मेंटेशन के लिए। केक इंडस्ट्री में, ब्रेड्स में आपको ईस्ट जरूरत होता है। पेस्ट्रीज बनाने में, केक्स बनाने में आपको ईस्ट जरूरत होता है। ओके, दे विल मेक ईस्ट फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। Commercial use of microorganisms. So how microorganisms are used commercially? For production for alcohol and wine, yeast is used. इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूविंग इंडस्ट्री। We say it as brewing industry. Okay, in brewing industry yeast is used for production of alcohol. alcohol किसे बोलते हैं? ग्रेप से बनता है। तो ग्रेप से अल्कोहल बनने के लिए हमें ईस्ट चाहिए। एसिटिक एसिड के लिए हमें एसिडोबैक्टर चाहिए। एसिडोबैक्टर इज आल्सो वन मोर बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर नाम। एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। ओके, so for this purpose yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice. So yeast use करने के लिए हमें yeast को grow करना पड़ेगा। We need to grow the yeast. Where we will grow it? On natural sugars, बार्ली में, जो बार्ली, व्हीट, राइस में नेचुरल सुगर होता है, तो उसके ऊपर हमें ग्रो करना पड़ेगा। लाइक बार्ली में ग्रो हो सकता है, व्हीट में ग्रो हो सकता है, राइस में, फ्रूट जूसेस में भी
क्रश्ड फ्रूट जूसेस में भी ग्रो हो सकता है आपका ईस्ट। ओके This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. कैसे आप करेंगे, देखो आप एक्टिविटी हमें छूट गया यहाँ पे। टेक ए 500 ml बीकर filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. वाटर में आपको शुगर ऐड करना है। Add half a spoon of yeast powder of the sugar to the sugar solution. Sugar solution, now you have to add yeast powder to it, and if you keep covered for 4 to 5 hours in a warm place, you can easily get the smell of alcohol. Don't drink it, you can only smell it. Okay, because alcohol is not at all good for your health. So the conversion of sugar into alcohol, see what I have told you, alcohol is made up of grapes, grape juice से बनता है। grape में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या है, glucose is a part of sugar. So how is alcohol made? From sugar. Sugar into alcohol, converted to alcohol, and the process is known as fermentation, discovered by Louis Pasteur. नाम आपको याद रखना है, Louis Pasteur. Medicinal use of microorganisms. What is the use of medicine in microorganisms? There is a vast use of microorganisms in medicine. आपको antibiotics नाम पता होगा. You must have remembered the name antibiotics. Antibiotics is nothing but the weakened pathogen. Let us see. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, or injections such as the penicillin. See, my mistake, antibiotics is not weakened pathogen, but it is also a microorganisms that stop the growth of other disease causing microorganisms. जैसे penicillin हो गया आपका, penicillin is an antibiotic. तो वो penicillin क्या होता है, बैक्टीरिया, सॉरी, penicillin is a fungi. So penicillin is used to stop the growth of bacteria or other disease causing microorganisms. So आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मुझे बुखार हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, तो he will give you a antibiotic, and that antibiotic will be used to kill the or stop the growth of the disease causing microorganisms. Okay, antibiotics, very important. The day's number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. In examples आप देखो, streptomycin, tetracycline, erythromycin, all are bacteria. They are the examples of antibiotics. Who was first to discover antibiotics? Alexander Fleming. Okay. On a culture of disease-causing bacteria, suddenly he found a spores of little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. वो क्या है, कल्चर प्लेट होता है। प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। Suddenly what he found that when some mold or fungi was there, bacteria stopped growing. So he thought that this type of or this class of microorganisms can cause other disease causing microorganisms to stop from growing, or they can kill the disease causing microorganisms. So this is how penicillin was prepared. Penicillin is an antibiotic. The antibiotics are manufactured by specific microorganisms and used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. Animals में infections को prevent करने के लिए या check करने के लिए भी use किया जाता है क्या, antibiotics. Say antibiotics should only be taken by the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective, and you might need in future. Suppose आप continuously antibiotic लेंगे, तो बाद में जब आपको असल में जरूरत होगा, तो वो एंटीबायोटिक काम करना बंद करेगा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे बॉडी में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, गट बैक्टीरिया बोलते हैं हम। गट बैक्टीरिया, व्हेन द एंटीबायोटिक विल आल्सो किल दैट गट बैक्टीरिया। सो जब आप असल में जब जरूरत होगा तब भी आपको काम नहीं करेगा और आपको बॉडी में दिक्कत होगा। सो जब आपको जरूरत हो तभी आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए।
सी फॉर वायरल डिजीजेस एंटीबायोटिक्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी। एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ओनली बैक्टीरियल या फंगल डिजीज में काम करता है, वायरल में वो काम नहीं करता है। वैक्सीन, वैक्सीन आप लोग सब कोरोना वैक्सीन लिए होगे अभी अभी रिसेंटली, यू ऑल मस्ट हैव टेकन कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन? Vaccine is also a type of, the vaccine present in it is also preformed antibodies or weakened pathogens. See, when a disease carrying microbes enter our body produces antibodies to the invader. देखो, सपोज ये एक है, ये लड़की है, इसके बॉडी में जो है ये बैक्टीरिया ने, कोलेरा वाला बैक्टीरिया जो भी है, इसके बॉडी में जो इन्फेक्ट कर गया। अब इसका एक नेचुरल इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी नेचुरली जो है, ये जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस भेजेगा, ओके, नोन एज योर एंटीजन। दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नोन एज एंटीजन, ओके, एजी लिखते हैं हम एंटीजन। और इस एंटीजन को टैकल करने के लिए, to tackle this antigen or to prevent the body from the harmful effects of this antigen secreted by the microorganism, harmful microorganism और disease carrying microorganism, हमारा बॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, एंटीबॉडी। इसको टैकल करने के लिए हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएगा, ए बी एंटीबॉडी, ए बी डी एंटीबॉडी। ये इन्वेड किया, इसको टैकल किया। अगर ये फिर से वही सेम, अगर आपके बॉडी में वो एबीडी नहीं है, सपोज आपके एक हार्मफुल डिजीज है कोरोना, आपके बॉडी में कोरोना को फाइट करने के लिए एबीडी एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या करेंगे? बाहर से एंटीबॉडी लेंगे। यू विल टेक द एंटीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड, जो कि लैब में बनता है। लैब में भी एंटीबॉडी हम बना सकते हैं। वी विल प्रिपेयर द एंटीबॉडी इन लैब, and from the lab, from the antibody through injection, you will take, that will be injected to your body और फिर वो हार्मफुल, अगर फिर से वो आया एजी एंटीजन, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस, तो वो एंटीबॉडी वाला आपके लिए जो आपको इंजेक्ट किया होगा, वो एंटीबॉडी आपको काम करेगा और वो डिजीज आपको नहीं होगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार काम करेगा फिर से लेना पड़ेगा? नहीं। सब when one antibody is injected your body, that is remembered by your body, कैसे लड़ना है उसे पता है, ओके। सपोज फर्स्ट अटैक हुआ, वो फाइट किया, सेकंड अटैक में उसे याद होगा कि कैसे फाइट करना है, तो आपको सेकंड अटैक में वो और एफिशिएंटली फाइट करता है। ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी उसका कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ओके। व्हेन फर्स्ट योर माइक्रोऑर्गेनिज्म will attack your body, it will release antigen, the antibody will attack, will try to defend your body, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, the antibody will defend your body from that antigen and you will be not affected by any disease. Second time, when again that antigen comes to your body and affects your body, that antigen comes to your body and affect your body, that antibody which is already present and also has the experience, देखो कोई भी फील्ड में एक्सपीरियंस मैटर करता है, that antibody has already got experience of one invasion, एक इन्वेजन का एक्सपीरियंस हो गया है, ऑलरेडी एक एंटीजन इन्वेड किया था, वो उसे डिफेंड कर चुका है। दूसरी बार जब वो अटैक करेगा तो वो और एफिशिएंटली, दमदार, पूरा सेना के साथ वो एंटीबॉडी क्या करेगा? उसको डिफेंड करके आपको वो डिजीज नहीं होने देगा। सो वही है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बोलते हैं हम उनको, जो हम इंजेक्शन में लेते हैं वो प्रीफॉर्म्ड होता है। कुछ कुछ एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में पहले से होते हैं, फ्रॉम बर्थ होते हैं, और कुछ कुछ हमें लेना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू। They are all preformed antibodies or dead or weakened microbes into healthy body which fights and kill the invading bacteria, producing suitable antibodies. Okay, वही सेम चीज तो आपको बोला था, वही लिखा है, the antibodies in the body are protected, we are protected from it, disease causing microbes. तो वैक्सीन का काम यही है, इम्यूनिटी वैक्सीन हमें देता है। समझ में आ गया वैक्सीन का काम? अगेन समझा देते हैं और एक बार, वैक्सीन में क्या होता है? वीकेंड और डेड माइक्रोब्स होते हैं, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं। कोई भी अगर आपको एक
सपोज कोलेरा ले जाते हैं, कोलेरा का अगर आपको बैक्टीरिया आ गया, कोलेरा बैक्टीरिया कॉज करता है, कोलेरा का बैक्टीरिया आपको बॉडी में आ गया, हिंदी में समझाता हूँ, इजी होगा सबको समझने के लिए, इंग्लिश ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। कोलेरा बैक्टीरिया केम इन कोम एंड इन्फेक्टेड योर बॉडी, कोलेरा का बैक्टीरिया है, बॉडी को इन्फेक्ट किया, एंटीबॉडी रिलीज किया, रिलीज ऑफ एंटीजन, सॉरी एंटीजन रिलीज किया आपके बॉडी में। आपको, आपने पहले से ही, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको क्या होगा, कोलेरा इन्फेक्ट हो जाएगा, आप कोलेरा से इन्फेक्ट हो जाओगे, यू विल बी इन्फेक्टेड बाय कोलेरा, आपको कोलेरा हो जाएगा। अगर आपको पहले से ही आप नहीं कोलेरा मुझे हो सकता है बोल के आपने इंजेक्शन ले लिया है, वैक्सीन ले लिया है, you have already taken the vaccine for cholera, then what will happen, you will be not infected by cholera. That already that antibodies which is injected in your body, injected in your blood, what will happen, it will fight with the antigens produced by the cholera bacteria, Vibrio cholerae, the name of the bacteria is Vibrio cholerae. So cholera का बैक्टीरिया जो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज आपने ऑलरेडी वैक्सीन के थ्रू से ले लिया है, वो आपको कोलेरा नहीं होने देगा, आपसे वो एंटीजन के साथ फाइट करके वो आपको कोलेरा नहीं होने देगा। सेकेंड पॉइंट, और एक बार अगर कोलेरा बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करता है आपके बॉडी को, तो वो जो एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होगा, तो आपको वो फिर से और दुगने सेना से, दुगने ताकत से वो फाइट करके आपको कभी भी कोलेरा जीवन में नहीं होने देगा, नेवर नेवर यू विल बी अफेक्टेड बाय कोलेरा। Tuberculosis also is one of the example. Smallpox is one of the example. Hepatitis is one of the example. Tuberculosis is caused by bacteria, smallpox virus, hepatitis virus. Okay, vaccination. Corona also the same example. You know, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. Edward Jenner, name should be remembered. Okay, children time mein you have taken many vaccines. Polio, you have taken polio drops, you have taken injections, okay, for different, to protect you from different diseases. So necessary vaccines are available in the nearby hospitals. Also in advertisement, television advertisement and newspapers also, they give the ads to spread awareness for vaccination of children, okay. For vaccination of children, polio drops are also given to the children. It is also a vaccine. If injections are also given. Why it is given? For eradication of disease. Disease के eradication के लिए हमें vaccine चाहिए. Worldwide campaign against smallpox has been led to its eradication from the most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from disease. See, animals को भी हम vaccines देते हैं. We give vaccines to animals to protect them from different disease. So for today this much, we will read the next part in the next class. Till then, thank you, bye bye, and take care.